Hello everyone. The most scenic, serene, green, peaceful location in Islamabad. It's none other than PN Farmhouses. मैंने अपने चैनल पे आपको PN Farmhouse का एक डिटेल्ड विजिट करवाया था with all of the location and the proximity from Islamabad and from Park View, from Bahria Enclave as well. आज मैं आपको एक्चुअल एक फार्म हाउस पे लेके जाऊंगी विच इज़ डेवलप्ड. लास्ट एपिसोड में जो फार्म हाउस का विज़िट किया था हम लोगों ने, दैट वाज एन ओल्ड वन, और वहाँ पे कोई रह भी नहीं रहा था और दे वांटेड टू डिस्पोज ऑफ, बट वी वर नॉट इंटरेस्टेड टू परचेज इट, इसलिए कि वहाँ पे सब कुछ कम्प्लीटली रेनोवेट करना पड़ता. बट दिस इज़ द प्लेस वी एक्चुअली हैव विजिटेड एंड इंटरेस्टेड टू बाय. So don't waste the time and let's visit inside that how it actually looks like. ये फार्म हाउस तकरीबन 20 कनाल का है. यहाँ पे जो मिनिमम फार्म हाउस का एरिया है वो 5 कनाल का है, जो कि तकरीबन 2.5 करोड़ से स्टार्ट होकर 3 करोड़ की प्राइसेस हैं इसकी. और बहुत से जो है एरियाज़ अभी इसके अनडेवलप्ड भी हैं इर्द गिर्द के, और जो सेक्टर ए है वो कम्प्लीटली डेवलप्ड है. बी और सी में कुछ तकरीबन काम हो चुका है. बेसिक यूटिलिटीज़ अभी कुछ जगहों पे अवेलेबल हैं, और कुछ सेक्टर्स में जैसा सी सेक्टर है और बी सेक्टर के कुछ एरियाज़ में अवेलेबल हैं. इफ़ वी आस्क अबाउट द ओरिजिनलिटी ऑफ द लैंड, तो ये सिर्फ पाकिस्तान नेवी के स्टाफ को ही अलॉट किए जाते हैं, और जो अगर अदर दैन दैट कुछ भी अवेलेबल है वो सिर्फ फ्री सेल के लिए अवेलेबल है. ऑब्वियसली यू कांट परचेज डायरेक्टली फ्रॉम दैम इफ़ यू नॉट फ्रॉम नेवल फोर्सेस. हर लोकेशन के अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं. अगर यहाँ की बात की जाए, ऑफ कोर्स हम PN फार्म हाउसेस को बहरिया इनक्लेव्स और गुलबर्ग ग्रीन के साथ बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज दे कैरी ह्यूज डिफरेंस. लेकिन अगर पार्क व्यू सिटी के साथ इसका कंपैरिजन किया जाए, विच इज़ लेस दैन 1 किलोमीटर अवे फ्राम PN फार्म हाउसेस, तो 1 कनाल की प्राइसेस में यहाँ और 5 कनाल की प्राइसेस में बहुत डिफरेंस है. इन पार्क व्यू सिटी आपको 1 कनाल का जो प्लॉट है वो 2.5 करोड़ में मिलता है, और यहाँ वही जो है प्लॉट फार्म हाउस आपको 5 कनाल में मिलता है. बाय द वे, दिस इज़ ऑल अबाउट द अनडेवलप्ड, ऑफ कोर्स नॉन कंस्ट्रक्टेड प्लॉट्स. और ऑफ कोर्स प्राइसेस कुछ ऑन ग्राउंड फीचर्स पे, लाइक इफ इट्स ऑन अ मेन बुलेवार्ड या उसकी जो ऑन ग्राउंड लोकेशन है उस पर भी डिपेंड करती हैं. So let's check out how it looks from the inside.
I like the fact that it's really a beautiful place और सिक्योरिटी का भी यहाँ पे कोई इशू नहीं है. इवन जो बहरिया फाउंडेशन के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनके चेक पोस्ट भी हैं यहाँ और वो पेट्रोलिंग पे भी रहते हैं. तीसरा प्राइसेस भी बहुत कम हैं ब्यूटीफुल लोकेशन के साथ यहाँ की. बट एक ड्रॉबैक जो मुझे फ़ील हुआ वो ये कि आपके यहाँ पे कोई भी मेन मार्केट नहीं है. इफ़ यू वांट टू परचेज समथिंग आपको हमेशा बहरिया एनक्लेव ही जाना पड़ता है बिकॉज आई गेस दे ओनली हैव अ मिनी मार्ट हेयर और जो कि मैंने अभी तक देखे नहीं हैं. और यहाँ के एक और जो ड्रॉबैक है वो यहाँ पे पहुँचने के लिए अगर जैसा पार्क व्यू से आते हुए यहाँ पे डबल रोड थी तो आगे नेक्स्ट भी इसी तरह होता तो बहुत अच्छा था. लेकिन यहाँ पे पहुँचने के लिए सिंगल रोड है जिसका ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर्स का है. पैच जो है वो बहुत नैरो है. So can ask for future if this area is gonna be fully developed तो इसका क्या हाल होगा. But otherwise if we ask about the scenic beauty it's superb. Let's go back to the poolside and I kid you not, wherever I saw water or a pool, I just instantly think to have a little experiment all the time with the water, and that is to place my 12 Pro Max inside water. So let's see how it looks like. It of course is a bit blurry unless you clean the lens, but otherwise it's obviously working very well. So here was a smaller trip inside the PN farmhouse. Please keep me updated. If you have any thoughts or questions, please drop me in the comment section. I will be waiting for it. Thank you everyone for watching and see you in my next video.